Thank you. Namaskar, Abhinandan, and a very good afternoon to the Honorable Governor of Assam, Shri Gulab Chand Kataria, sir, eminent dignitaries on the dais, dignitaries across the dais, faculty members, students, members of the press, ladies and gentlemen. On behalf of Association of Indian Universities and University of Science and Technology, Meghalaya, we welcome you all to the valedictory program of the 97th Annual Meet and National Conference of Vice Chancellors on transformative higher education for Atmanirbhar Bharat. The journey, which began with 1 computer, 4 students, rupees 85 by our Honorable Chancellor in 2001, has been made memorable and historic by the Association of Indian Universities by giving us this opportunity to host the 97th Annual Meet and the National Conference of Vice Chancellors. Thank you so much. We would now begin our program with the felicitation of our honored guest. Honorable dignitaries, we are pleased and privileged to have with us today Shri Gulab Chand Kataria, sir, Honorable Governor of Assam. He was the former Home Minister of Rajasthan and the leader of opposition in the Rajasthan Legislative Assembly prior to his appointment as the Honorable Governor of Assam. So we welcome you. We request Professor Suranjan Das, sir, Honorable President AIU, to kindly felicitate our Honorable Governor, sir. We would request Shri Mahbubul Haq, sir, Honorable Chancellor USTM, to kindly felicitate, sir. I would request Dr. Pankaj Mittal, ma'am, Honorable Secretary General AIU, to kindly felicitate Honorable Sir. We would also like to take this opportunity to felicitate Shri Rakam A. Sangma, sir, Honorable Minister of Education, Border Areas Development Department, General Administration, Government of Meghalaya. We would request Professor Suranjan Das, sir, to felicitate Honorable Sir. We request Mahbubul Haq, sir, Chancellor USTM, to also felicitate the Honorable Sir, and Dr. Pankaj Mittal, ma'am, to felicitate the Honorable Education Minister of Meghalaya. We would like to felicitate Shri Atul Kothari, sir, Honorable National Secretary, Siksha Sanskriti Utthayan Nyas. We request Honorable Suranjan Das, sir, Pankaj Mittal, ma'am, and Professor G.D. Sharma, sir, to do the honors. We would also like to take this opportunity to felicitate Dr. Noni Gopal Mahanto, sir, Honorable Education Advisor, Government of Assam. We would request Professor Suranjan Das, sir, Dr. Pankaj Mittal, ma'am, and Professor G.D. Sharma, sir, to kindly felicitate, sir. We would now like to request Professor G.D. Sharma, sir, Honorable Vice Chancellor, USTM, to kindly present the welcome address. Good afternoon to every one of you. In
valedictory session of 97th Annual Meet and National Conference of Vice Chancellors 2023, Honorable Shri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Governor of Assam and Chief Guest of today's function, Honorable Education Minister of Meghalaya, Shri Rakkame Sangma ji, Honorable Shri Atul Kothari ji, National Secretary, Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, Honorable Shri Nani Gopal Mahanta ji, Education Minister, Government of Assam, Honorable Professor Suranjan Das ji, Honorable Vice Chancellor of Jadavpur University, Kolkata, and President of Association of Indian University, Dr. Pankaj Mittal ji, Secretary General, Association of Indian Universities, Honorable other guests, Honorable Chancellor of USTM, Shri Mehboob Haq, Dr. S. Ramapani, Editor, University News, other Honorable Vice Chancellors from different universities from India and abroad, Honorable all directors from IITs, NITs, IIITs, and other national bodies, heads of the statutory bodies from the country, respected faculty members, officers of different government, all the officers of the university and other educational institutions, participants, dear students, coordinators of the various committees, and media personals, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to extend a very, very warm, humble welcome to Honorable Governor of Assam, Shri Gulab Chand Kataria ji, who has agreed to be the chief guest of this valedictory function. I also take this opportunity to extend a very warm welcome to Shri Atul Kothari ji, Shri R. Rakkame Sangma ji, Honorable Education Minister of Meghalaya, Professor Nani Gopal Mahanta ji, Honorable Vice Chancellor of Jadavpur University, Professor Suranjan Das ji, and President of Association of Indian Universities, Dr. Mrs. Pankaj Mittal ji, Secretary General of AIU, and all Honorable Vice Chancellors and all other dignitaries. I also extend very warm welcome to all our directors and faculty members, participants from different parts of the country to make this event a grand event, make it historic, because this is the only National Conference of Vice Chancellors where maximum number of Vice Chancellors have participated from different parts of the country. That shows that how much affinity and support is extended to Northeast India, and also take the Northeast India as a leader in transforming the higher education to make India as Atmanirbhar Bharat. And also to emerge as Vishguru by 2047. Last evening, USTM has also signed more than 50 MOU with different universities, and that also indicates that this conference is not only to discuss and deliberate on various issues related to higher education, but also has started collaboration and cooperation and sharing strength, both physical infrastructure as well as the academic intellectual sharing and research, so that it can do the value addition in our higher education, and also prepare our youths to compete both at national and international level, so that it will improve the ranking and rating at world level. And this model of interaction can bring a better utilization of resources of our country. Last evening, the Additional Chief Secretary of Uttar Pradesh,
Srimati Monica Gargi, she presented a very successful implementation of NAP 2020 in Uttar Pradesh, and many other states have also implemented. That indicates that already many of our universities have already initiated the working, not only organizing seminars on the NAP 2020, but implementation of NAP 2020 and providing opportunities to the youth so that they become more productive and more they can contribute to create the jobs, not only the job seekers. Various issues related to pedagogy, learning, both blended and other physical mode, also with industrial linkages, societal oriented problems were discussed in various technical sessions. During this 3 days seminar of the Vice Chancellors, a number of issues were raised and discussed, and the issues will make the basis for making the recommendation to the Government of India. I welcome all the issues which have been raised by our Honorable Vice Chancellor during different technical sessions, and chairmans, co-chairmans, and also speakers who have deliberated on this indicates that we have strength to come out with a new model of higher education. So with this, I once again extend a very warm welcome to each one of you. Thank you very much. Thank you, sir. I would now like to invite Dr. Pankaj Mittal, ma'am, Honorable Secretary General, AIU, to kindly address the gathering, ma'am. Thank you, Mahajabi. Honorable Governor of Assam, Shri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Minister of Education, Shri Rakami Sangma ji, Honorable National Secretary, Shiksha Sanskriti Uthan Nyas, Shri Atul Kothari ji, Honorable Education Advisor, Government of Assam, Dr. Nani Gopal Mahanta ji, our Honorable and beloved President of AIU, Dr. Suranjan Das ji, again, Honorable and beloved Vice President of AIU, Dr. G.D. Sharma ji, who is the President designate from today onwards, Honorable Chancellor of USTM, Honorable Chancellor of USTM, Shri Mahabubul Haq ji, whom you have seen every day running after everybody to make all of us comfortable, esteemed Vice Chancellors, faculty members, very dear students who are sitting here, Team AIU and Team USTM, a very good afternoon to all of you. On behalf of AIU and USTM, a very, very warm welcome to the valedictory section of the 3-day mega event, National Conference of Vice Chancellors, which have been made more mega by the USTM University on the theme Transformative Higher Education for Atmanirbhar Bharat. The conference has been made very, very special by your presence, and due to the excellent arrangements made by USTM University, which has gone beyond means to sort of make each one of us very, very comfortable, and the ambience and the type of auditorium which is there and the type of facilities which are there, and the way each and every student, especially the ones who are working as escorts, the way they have helped the persons whom they were escorting, I mean, it is beyond imagination. So very big thanks to all of you for this. This 3-day conference had 6 sessions, and in each session we had a lot to learn. I know that we don't have much time with us, so very quickly I will tell about 10 takeaways which I took from these 6 sessions. There are many more, but 10 I am going to tell to you. One is, when Dr. Vivek Debroy was speaking, he mentioned that we are having a demographic dividend. We are the youngest population of the world, but this demographic dividend is not going to last forever. So it is better that we make use of this demographic dividend by the time it lasts. And the demographic transition, when it happens, we are going to be losing this demographic dividend. Therefore, it is important that we all work in partnerships, not in silos. For example, school education, higher education,
technical education, vocational education. So it should not be working in silos. It should be working in partnership, in collaboration with each other, so that we can really make use of this demographic dividend. Second thing, which was very interesting, we all talking about multiple entry, multiple exit policy in the higher education institutions. We do say that we all have implemented NEP, we have introduced 4-year program, we have introduced multiple entry exit, but he was talking of a different exit policy. He said that we need an exit policy for the students, for the program, but we also need an exit policy for the teachers, for the institutions, for the small colleges who are not performing well. So when will we make the exit policy for these small colleges who are having an enrollment of less than 50, less than 100, and who are really not performing? And for the teachers who are not coming up with who are not regularly reskilling themselves. So that is very important, that when we are talking of future of education, future of learning, future of jobs, it is very important that the teachers reskill themselves. And if they don't reskill, there should be an exit policy for the teachers. Thirdly, on the concept of Sarvodaya, the Honorable former President of India, he mentioned that we need to take care of each student, and especially of the student he is standing in the last row, means the students who are in the remote areas, in the rural areas, in the backward areas. So we should be taking care of all these students when we are making the policies and when we are implementing the policies. Fourth, there was a session on internationalization, where we learned that internationalization has to be taken up seriously by universities, and they need to invest time, energy, and money on internationalization, for promoting internationalization and for promoting sustainable partnerships. Like yesterday, we signed around 50 to 60 MOUs sitting in this very hall. This was something very new which has happened, that MOUs were signed during the Vice Chancellors Conference. And again, I think this is a benchmark set up by USTM, that we will be maybe in future signing many MOUs, and maybe between AIU and the universities also on various aspects, and including like how to set up the Office of Global Affairs, and what will be the structure of Office of Global Affairs. Fifth, there was a session on promotion of Indian languages. Dr. Chamu Shastri ji was here, Dr. Nageshwar Rao were here, and it was said that yes, it is, when you learn in your own language, it is much easier, although I am speaking in English because of we have vice chancellors from all over the country. But if you learn in your own language, it is easier. But for that, we need the books in our local languages. So universities should contribute a lot in making books or translating books in the local languages, so that the students get the advantage of learning in their own local languages. Sixth, the students need to be skilled not only for getting employment, but for giving employment, for entrepreneurship, for startups, for incubation. So we should introduce the skills in the students in such a manner that they not only seek employment, but they give employment, and they are not only employed in their academic, whichever academic field they are pursuing, but they also have other skills which are required for being a good citizen of the country. Then there was a talk about one nation, one data. We know the pains which are experienced by the universities in filling up the data again and again for NAC, for NIRF, for different bodies. So the move that one nation, one data moved by AICTE, that is a welcome move, where one place would enter the data and everybody will pick up the data from that central repository. There was also the talk that now the time has come up for, there was a request from one of the vice chancellors that national research agenda should be set up, that we should be knowing that where we all should be heading. So if the government of India can come up with a national research agenda in terms of thrust areas or where the country wants the research to move, of course, it cannot be totally targeted towards those thrust areas only, but at least there is some thrust areas where the university should be working, so that we get more research in those areas which can be solving the problems of the society, and socially and relevant research is there. And lastly, we heard a new term today, API. API, we used to learn about academic performance indicator. We used to talk about API scores, but today we heard that API is active pharmaceutical ingredients in pharmacy, but for
education API is active pedagogical ingredients, means we have to change the pedagogy. We have to have active pedagogical ingredients to improve our teaching learning, especially in the future learning space, the way we are going to learn, because the role of the teacher has to turn as a facilitator, because a lot of information is already there on net. Teacher cannot be working as an information giver. He or she has to work as a facilitator. So active pedagogical ingredients. So detailed recommendations will be there, which will be sent to the government and the regulatory bodies. And I'm sure many good recommendations are there, which will help the government in making policy documents. So thanks to all of you once again. Special thanks to the Chancellor of the university, Mr. Huck. Special thanks to the Vice Chancellor, Registrar, faculty, the PRO of the university, who made very good. I mean, the coverage of the conference was very good. Thanks to the PRO. Team USTM, team AIU, who are really very good for the students and the faculty. I said there are 6 words. I mean, I wrote an acronym, DECIDE, DECIDE, that in these six words we can represent the type of, the nature of the students and the faculty which is present in USTM. And this DECIDE is, first D stands for dedicated. They are very, very dedicated. E stands for energetic. They are very energetic. C stands for committed. Each and every one of them was so committed. I mean, they were not doing it as a duty. They were doing it as their own work. I stands for inquisitive. They all were very inquisitive. They wanted to learn more and more from the conference also. Again, the second D decides for disciplined. I haven't seen such disciplined students in my life. They were so disciplined. And lastly, 6 stands E. Decide ka E stands for enthusiastic. They were very, very enthusiastic. So thanks to all the students, special thanks to all the students and the faculty members who made this conference really a memorable one for all of us. It will really be etched in our memories for lifetime. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am, for giving us this opportunity. I would now like to request Dr. S. Ramadevi Pani, ma'am, editor of News, University News AIU, to kindly present the conference report, ma'am. Thank you, Dr. Mazen. Good morning, good afternoon, everyone. Honorable Chief Guest of this valedictory session, Shri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Governor of Assam. Esteemed guests of honor, Shri Atul Kothari ji, National Secretary, Siksha, Sanskriti, Utthanyas. Shri Rakkam E. Sangma, Honorable Education Minister, Government of Meghalaya. Respected Professor Nani Gopal Mahanta, Education Advisor, Government of Assam. Most revered President of Association of Indian Universities, Professor Suranjan Das. President Designate and Vice Chancellor of this university. President AIU Designate and Vice Chancellor of this university, esteemed Professor G.D. Sharma ji. Most acclaimed Secretary General, Madam Dr. Pankaj Mittal. Honorable Vice Chancellors who have come from different places to attend this meet, and those who are attending online, my colleagues from AIU and the host universities, distinguished guests, delegates, invitees, ladies and gentlemen. We have come to the conclusion of this 97th AIU General Meet and National Conference of Vice Chancellors on Transformative Higher Education for Atmanirbhar Bharat. I am privileged to present a brief report of what all happened in these 3 days in this meet as well as the conference. This is the 97th annual general meet of the AIU. And it is remarkable and unique in several fronts. Most importantly, the meet had very rich academic speakers, and we have come out with very, very good recommendations, which we shall be sending it to Government of India and various other bodies. Secondly, the attendance of Vice Chancellors who have come in large numbers to make this meet a success. And thirdly, the marvelous arrangements made by this university and the hospitality. And fourthly, the women and boys here dressed up in traditional dress for welcoming all of us. These 3 days, we had the feast for eyes to see the traditional dresses of Assam and traditional food of Assam. So this is in general about the meet. Now I proceed towards the sessions. We had inaugural session
on the first day, where after the lighting of the lamp and Saraswati Vandana and felicitation of guests, Shri Mahbubul Haq, Honorable Vice Chancellor of USTM Meghalaya, delivered the welcome address, and he informed about the various dignitaries who had graced this campus and helped him in improving the campus. He particularly took the name of Dr. APJ Abdul Kalam and Shri Ramnath Kovindji. In her introductory address, Dr. Pankaj Mittal gave the background about this meet and also told about the initiatives being taken by the AIU to improve the overall higher education system of the country. While delivering the presidential address, Professor Suranjan Das, President AIU and VC Jadavpur University, stated that NEP 2020 is bringing a paradigmatic shift in the education from an informative to a formative curriculum. He said that interdisciplinary education transforms higher education institute from the seat of teaching to the seat of learning by adapting student-centric pedagogy. He gave elaborate details about the teaching, learning, and spoke many things. The guest of honor, Dr. Ranoj Pegu, Honorable Minister of Education, Government of Assam, in his speech, emphasized that as a nation, we cannot become Atmanirbhar without the cooperation of states, districts, and villages, and they're becoming Atmanirbhar. Working in silos will not lead the country to anywhere, so we have to make a concerted effort. That was the main point which was put forth by Honorable Education Minister of Assam. In the Foundation Day lecture, this 23rd March happens to be the Foundation Day of AIU. Every day we celebrate the Foundation Day, as Madam said. This time we had the honor of having Dr. Vivek Roy, Chairman, Economic Advisory Council to Honorable Prime Minister, Government of India. He emphasized that India is going through a demographic transition wherein the percentage of young population is going up, and the country needs to take advantage of demographic dividend for facilitating an improved GDP growth. He encouraged higher education institutions not to follow the traditional silo system while teaching and learning. Again, he emphasized on the concerted efforts. In his inaugural address, Honorable former President of India, Shri Ramnath Kovind, asserted that the agenda of AIU reflects the NEP 2020 by focusing on education of modern sciences, giving emphasis on public interest and morality to build a strong and reliable India by strengthening local resources and by uplifting the left behind. He quoted Mahatma Gandhi regarding working towards the upliftment of the people who are downtrodden. And he gave the responsibility to AIU to work towards the upliftment of all the university. He recommended that universities should be established in far-flung and remote areas and aspirational districts, so that we all can become a nation, Atmanirbhar nation together. We had a special session on interaction of apex bodies and foreign dignitaries. The session was to have a face-to-face interaction. The session was chaired by Professor Suranjan Das, President AIU. It was co-chaired by Dr. Pankaj Mittal. The key speakers of the session were Dr. Abhay Jere, Dr. B.S. Purnimudi, Abhay Jere, Vice Chairman AICT, Dr. Purnimuduraj from Advisor NAC, Dr. Seema Jaggi, Additional Director General ICAR, Professor Bhola Thapa, Kathmandu University, and Mr. Aditya Malkani, Director, Commonwealth Center in Mumbai. A few recommendations for this session are, we need to focus on establishment of vocational centers in each district with equal emphasis on rural areas. Professors of research and innovation be recognized by regulatory bodies for guiding research. The second recommendation is, while we are speaking about openness, universal access and spread of skill integrated higher education, we should not restrict skill universities to come up and flourish. So rather we should promote more and more skill universities to come forward. There are several other recommendations. Paucity of time, I'm not reading. The report will be sent. The first technical session was chaired by Madam
Professor Shanti Shri Dhulipudi Pandit, Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University, and it was co-chaired by Professor Balvinder Shukla, Vice Chancellor, Amity University, UP. The speakers of this session were Dr. Vidya Ravdekar, Pro-Chancellor, Symbiosis International University, Mr. Matthew Johnston, Professor K. Trivedi, and Professor C. Rajkumar, Jindal Open University, Sodipat. The recommendations of this session are promoting courses and programs in subjects such as Indology, Indian languages, Ayush system of medicines, yoga, etc. is the need of the hour. Collaborations can be either in teaching or partnerships in teaching, learning, and other facilities for providing English language training to the students, which can be helped with programs like buddy assignment and foreign students coming to the country. Then we have a special session on promotion of Indian languages and entrepreneurial education. This session was chaired by Professor Chamu Krishna Sastry, Chairman, Bharatiya Bhasha Samiti. He was the key speaker, and we had speakers, Professor Nagesh Rao, Vice Chancellor, IGNOU, Professor R.K. Mittal, Vice Chancellor, Chaudhary Bansilal University, and Professor Somnath Sachdeva, Vice Chancellor, Kurukshetra University. This session by name itself reveals that the Indian languages be promoted, but they emphasize that it is not that Indian languages are being imposed, but they should be there should be autonomy to learn everything along with the Indian languages. That was the point made by the House. Then we had the session on minimum government and maximum governance. What does it mean for universities? It was chaired by Dr. Abhay Jere, co-chaired by Rajiv Mohan Pant, Vice Chancellors, Assam Central University. Speakers were Dr. Nilima Gupta, Dr. S. Vaidya, Nilima Gupta, Vice Chancellor, Central University, Dr. Hari Singh Gaur University, Dr. Vaidya Subramaniam, Vice Chancellor, Shastra, Professor Alok Kumar Chakrawal, Vice Chancellor, Central University, Chhattisgarh. The recommendations include standards should be developed based on nature of different disciplines. One set of formula must not be applied to all disciplines. Flexibility should be incorporated while setting the standards and deciding the regulatory mechanisms. The third technical session was on reforms for holistic education. The session was chaired by Professor Gautam Barua, Director, IIIT Guwahati, co-chaired by Professor Dujyoti Chattopadhyay, Vice Chancellor, Sister Nivedita University. The speakers were Dr. Bashir Ahmed Shadrak, Director, SEMCA, Srimati Monica Garg, Additional Chief Secretary, Government of UP, Professor Vistap Carberry, Professor, Vice Chancellors, Texas University, USA. The key recommendation include emphasize the importance of holistic education, preparing individuals to become well-rounded and successful in all aspects of personality, both personally and professionally. It was emphasized that we should actually define what do we mean by holistic education and outcome-based education. We had the fourth session on creating ecosystem for research and excellence. This session was chaired by Dr. Basudkar J. Rao, Vice Chancellor, Central University, Hyderabad, co-chaired by Professor Sandeep Sancheti, former President, AIU and Vice Chancellor, Marwadi University, Rajasthan. Professor Vivek Sauji, Vice Chancellor, Bharati Vidyapeeth, Pune, Professor P.B. Sharma, Vice Chancellor, Amity University, and Professor Bud Hall, UNESCO Chair for Community-Based Research. The session emphasized that research and excellence as both products of mind, hence the mind's process must be global. India has reached a crucial point where it has become the hub of highly skilled individuals. Practical-based learning will drive innovation, and we must imagine a new educational system for the country. And we had the final session today morning, which was chaired by Professor Ranveer Singh, former President AIU and the present Chancellor IILM University. It was co-chaired by speakers were Professor M.M. Pant, former Pro-Vice Chancellor IGNOU, Professor Mama Mukhopadhyay, Chairman Educational Technology Management Association, former Director NIPA, and Professor Amma P. Garg, Vice Chancellor Shobit University. The key recommendation was there should be initiatives for skill development of teachers, and courses should be reviewed and changed as per the skills required by the teachers as well as the students. The report was prepared by Professor B.I. Bashirul
Islam Lashkar, Chair Professor, P.A. Sangma Center for Tribal Research, Dr. Sukanya Kashyap, Assistant Professor English, Dr. Lilika Jimomi have provided assistance to him, Ms. Arnoni Debarma, Ms. Eugene Khairiam, and Ms. Ankita Barua. Also, the research scholars helped in preparing this report. I'm thankful to one and all. Thanks to the House. Thank you. Thank you, ma'am. We would now like to invite Professor Suranjan Das, Honorable President, AIU, and Honorable Vice Chancellor, Jadavpur University, to kindly address the gathering. Sir. Honorable Governor of Assam, Sri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Education Minister of Meghalaya, Sri Rakam A. Sangma ji, Honorable Education Advisor to the Government of Assam, Professor Noni Gopal Mahanta ji, Honorable National Secretary Shiksha Sanskriti Uttan Nyas, Sri Atul Kothari ji, Honorable Chancellor of USTM, Mahbul Haq ji, Honorable Vice Chancellor of USTM, Professor G.D. Sharma, and President-elect of AIU, Dr. Pankaj Mittal, Honorable Secretary General of AIU, and my distinguished colleagues from AIU, my esteemed colleague Vice Chancellors, and of course, my very dear students. I shan't take much of your time except 1 minute to say that how grateful are we as the AIU to the USTM community for hosting this AIU meet in a manner which will go down in the history of AIU as an unparalleled AIU annual meet. This meet has not only been a meet where the warmth and sincerity and hospitality of the host university has become apparent, but this is also a meet where deliberations were most enriching. This, of course, this has been possible because of the dynamic leadership of the Honorable Chancellor and the Vice Chancellor. But as Dr. Mittal pointed out, this would not have been possible without the dedication, commitment, and sincerity of all sections of the university community. I salute them, thank them, and express my gratitude. And as I thank the USTM community, I am reminded of a pertinent quote from Dalai Lama, and the quote runs as follows: "The roots of all goodness lie in the soil of appreciation for goodness," unquote. And this is the spirit with which I thank the USTM. And along with thanks comes the gratitude. And again, as I and on my own behalf and on behalf of the AIU express our sincere gratitude to USTM, I am again expressing this gratitude to the words of a very famous philosopher. And the quote runs as follows: "Gratitude is a quality similar to electricity. It must be produced and discharged and used up in order to exist at all," unquote. I express my gratitude in this particular spirit. USTA has set up a new standard in organizing the AIU meets, and I'm sure the next university which will host the AIU meet will not only meet up this standard, but will also further enrich this standard. Thank you very much. Thank you, sir. We would now like to request Shri Atul Kothari, sir, Honorable National Secretary, Shiksha Sanskriti Uttan Nyas, sir, to kindly address the gathering. Sir. ट्रांसफॉर्मेटिव हायर एजुकेशन और आत्मनिर्भर भारत, इस विषय पर भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा आयोजित इस कुलपतियों के सम्मेलन के समापन सत्र के मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी, मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय कुलपति महोदय, विद्वान आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि एक शिक्षा के लिए और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे विषय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लगभग
1.5 year, before 1.5 year, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया था कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाने पर काम करें। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो हम सबके लिए होता है वो, तो हम लोगों ने भी विचार किया कि हमारा क्या रोल बनता है इसमें, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विचार करते हुए ध्यान में आया कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक कोई देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और छात्रों को आत्मनिर्भर करने का माध्यम जो है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और इसमें यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारे सामने आई है, उसको अगर टोटालिटी में इंप्लीमेंट करेंगे अगर, तो देश आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ेगा। और इस नीति का जो आधारभूत थीम है, हर नीति की कोई ना कोई थीम होती है। इस नीति का जो हिंदी का ड्राफ्ट है उस पर पेज 8 पर एक स्मॉल पैराग्राफ है। पॉलिसी का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में इस पर लिखा गया है। वो जो एक पैराग्राफ में लिखा गया है उसको 1 लाइन में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं कि शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। यह पहली स्वतंत्र भारत की नीति है जिसका आधार भारतीयता है। इस नीति की दूसरी विशेषता है कि इस नीति में होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कही गई है। समग्र, सर्वांगीण, एकात्म दृष्टि। ये होलिस्टिक अप्रोच यही भारतीय अप्रोच है। पिछले 175 इयर्स की एजुकेशन पॉलिसी का हम सबको हर बात पार्टली सोचने की एक सिस्टम डेवलप हो गई। जैसा आज का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत, उसी पर केंद्रित करके अगर बात करें तो इस पॉलिसी में भी वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की है, स्किल डेवलपमेंट की बात की है, इनोवेशन की बात की है, रिसर्च की बात की है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। अब ये सब सेपरेट सब्जेक्ट लगते हैं हम लोगों को, और इसी प्रकार प्रयास किया जाता है। लेकिन ये कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, सब इंटीग्रेटेड है। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी ये कोई टापू नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी जिस एरिया में है उस एरिया की सामाजिक, राष्ट्रीय जो आवश्यकता है उसकी फुलफिल करना, पूर्ति करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की होती है। महात्मा गांधी जी ने 1946 10 नवंबर के जो विशेषांक था उसमें उन्होंने लिखा है, हरिजन सेवक के विशेषांक में, गांवों को पुनर्स्थापना का कार्य कामचलाऊ नहीं बल्कि स्थायी होना चाहिए। उद्योग, हुनर, तंदुरुस्ती यानी हेल्थ एंड एजुकेशन, इन चारों का सुंदर समन्वय करना चाहिए। और वह बात नई तालीम में कही गई है। जो गांधी जी ने नई तालीम का एक कॉन्सेप्ट दिया था एजुकेशन चेंज के लिए, उसमें इसी का समावेश किया गया है। और आगे उन्होंने कहा कि मैं किसी उद्योग यानी इंडस्ट्रीज और एजुकेशन को सेपरेट नहीं मानता हूं, बल्कि उद्योग शिक्षा का जरिया होना चाहिए। अगर ये गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट कहो, एजुकेशन पॉलिसी के थॉट कहो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं।
मैं कहता हूं कि गांधी जी या जिन जिन महापुरुषों ने एजुकेशन के बारे में अपने विचार, अपने थॉट व्यक्त किए हैं, वो सारा इस एजुकेशन पॉलिसी में इनकलकेट करने का प्रयास किया गया है। इसलिए इसको केंद्र बिंदु रखकर हम लोगों को प्लानिंग करने की आवश्यकता है, और कुछ यूनिवर्सिटी कर भी रहे हैं, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस भी है। हम लोग कई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस विषय पर काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के एक नेशनल लेवल के एक कुछ एजेंडा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं। ठीक है, अच्छा है, सेंट्रल लेवल का एक एजेंडा है। लेकिन एक बार स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिलना हुआ तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि ये सेंट्रल लेवल का जो एजेंडा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल को वोकल बनाओ, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो मैंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्किल का मैपिंग होना चाहिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हर यूनिवर्सिटी का जो स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया का एक यूनिवर्सिटी के द्वारा मैपिंग होना चाहिए कि वहां एग्रीकल्चर की नीड क्या है, इंडस्ट्री की नीड क्या है, वहां के कला, कारीगरी आदि आदि क्षेत्र, हेल्थ की नीड क्या है, इसका एक मैपिंग करना चाहिए। और उस मैपिंग के आधार पर फिर यूनिवर्सिटी में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए। हमने जब कानपुर यूनिवर्सिटी में काम किया था कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, आत्मनिर्भर कानपुर विषय पर, तो वहां की जो कमिटी, उसमें इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन सेक्रेटरी भी थे। तो एक मीटिंग में आए थे, तो मैं उस राष्ट्रीय सलाहकार था, तो इस मीटिंग में आया तो मुझे कहा कि अतुल जी, आप हमारे इंडस्ट्रीज एरिया में आइए, बोर्ड लगे हुए हैं कि कुशल कारीगर चाहिए, स्किल वाले लोग चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहे हम। तो मैंने उनको कहा कि आप सर्वे करके हमको दीजिए, और जिस प्रकार की आपकी आवश्यकता है, इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम कानपुर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार की ये भूमिका यूनिवर्सिटी की अगर बनती है, तो वो जो स्पेसिफिक एरिया है, विलेजेस है, हमारा हर गांव में, हर क्षेत्र में बहुत कई विशेषताएं हैं। जैसे हम लोग एमपी के ट्राइबल एरिया में झाबुआ में काम कर रहे हैं। आपका तो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, वो तो स्कूल है और वो प्राइवेट स्कूल है, शारदा विद्यापीठ नाम से। तो उन्होंने 2 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बात हुई, तो हमारे साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया, और कई विषय पर पहले सर्वे करके बहुत सारे विषय पर काम किया। एक मैं एग्जांपल सिंपल देना चाहूंगा कि वो गुड़िया बहुत अच्छी बनाती है, जनजाति क्षेत्र के लोग, डॉल, लेकिन उसको कुछ अच्छा पेमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए धीरे धीरे वो उनकी कला जो वो विलुप्त होने जा रही थी। तो स्कूल ने अपने स्कूल में स्किल डेवलपमेंट में इसको जोड़ा। और टीचिंग के लिए कौन आते हैं, ट्रेनिंग के लिए कौन आते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए उसी ट्राइबल एरिया के, जो जिसको हम अनपढ़ इलिटरेट लोग कहते हैं, लेकिन इस कला में वो माहिर है, वो आते हैं। और वहां के जो ट्राइबल बच्चे हैं, वो फिर से वो कला सीखने लगे। मैं अभी बिफोर 6 मंथ वहां गया था, तो मैंने पूछा कि रिजल्ट क्या है, तो 2 रिजल्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पहले इस गुड़िया का, डोल का 150-200 से ज्यादा रुपया उनको नहीं मिल रहे थे, लेकिन स्कूल ने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू किया इस गुड़िया का, और उन्होंने कहा एक गुड़िया का अभी 1500-2000 रुपीज अभी मिलने लगे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे, 8, 9, 10 के बच्चे पैसा कमाने लगे, और वो कला फिर से जीवित हो गई। और जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति है, एक व्यक्ति, वो दोनों पति पत्नी जो आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल में, अभी अभी उनको 2 दिन पहले ही सरकार द्वारा घोषित पद्म श्री सम्मान मिला इन दोनों। ये रिजल्ट है आत्मनिर्भरता का। तो इस प्रकार के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देना है, नहीं क्या कोई अलग सब्जेक्ट है वोकेशनल एजुकेशन? बच्चे के सब्जेक्ट के अनुसार लोकल नीड के साथ कनेक्ट करते हुए उसी प्रकार के व्यवहारिक शिक्षा उनको देना, उसमें वो एक्सपर्टाइज होगा तो स्किल हो जाएगा, उसमें कुछ नए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इनोवेशन हो जाएगा, और उस पर आगे जाकर हायर एजुकेशन में रिसर्च करेंगे तो पीएचडी हो जाएगा।
इस प्रकार का एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से, इंटीग्रेटेड अप्रोच से, होलिस्टिक दृष्टिकोण से इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है। और हर यूनिवर्सिटी, देश में हमारे 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, एक डिस्ट्रिक्ट की भी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं आएगा। अगर इसका हम नेक्स्ट ईयर प्लान करें, मैंने अभी पंकज मित्तल जी से यही मैं चर्चा करता था कि प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं जो इस पर, ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन होने चाहिए कॉन्फ्रेंसेस में। सिर्फ थियरी भाषण तो मेरे जैसे बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जिस यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में इस पर काम किया जा रहा है, ऐसे लोगों का जब प्रेजेंटेशन होता है तो शेयरिंग भी होता है और फिर केयरिंग भी होता है। और फिर देश भर के, मैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। तो इस प्रकार का ये यूनिवर्सिटी में प्लान करना है, तो यूनिवर्सिटी एक टापू नहीं बनकर रहेगा, लेकिन सोसाइटी के सुख दुख में भाग लेने वाला, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने वाला, गरीबों का, पीड़ितों के उत्थान करने वाला ऐसा एक सेंटर यूनिवर्सिटी बनेगा। यही हमारा जो भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, उनकी यही संकल्पना थी, इसी प्रकार काम करते थे और तभी देश विश्वगुरु था। तो इस एजुकेशन पॉलिसी का एक कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी जी का भी एक कॉन्सेप्ट है। इसको हम इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान करें। एआईयू का तो जो दायित्व था ये इन्होंने निभाया है कि एक कॉन्फ्रेंस करके इस पर डिस्कशन किया है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना तो हम सबका काम है। तो अगले वर्ष हम जब मिले 1 वर्ष के बाद, तो हम कह सके कि हमने इस दिशा में बहुत सारा हमारी यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है, और इस एरिया को आत्मनिर्भर करने के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया है। और जिससे हमारा छात्र भी आत्मनिर्भर होगा, यूनिवर्सिटी आत्मनिर्भर होगी और उस एरिया को भी आत्मनिर्भर करेंगे, तो भारत को आत्मनिर्भर करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार की एक संकल्पना से इस कॉन्फ्रेंस में ये विषय का आयोजन रखा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं एआईयू को फिर से अभिनंदन देता हूं, और एआईयू ने अपनी भूमिका निर्वाह किया है। हम सब मिलकर इस दिशा में प्रैक्टिकल काम करते हुए इसको आगे के वर्ष के लिए टारगेट बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से, देश की शिक्षा के माध्यम से, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बहुत कुछ हम योगदान कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी विजन के साथ हम सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के प्रयास करें। यही आप सबसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। Shukriya, sir. I would now like to request Professor Noni Gopal Mohanto, sir, Honorable Advisor, Education, Government of Assam, to kindly address the gathering, sir. Namaskar. Honorable Governor of Assam, Shri Gulab Chand Kataria Dangoria, Honorable Minister Shri Rakkam A. Sangma, Education Minister of Meghalaya, Professor Z.D. Sharma, Honorable Vice Chancellor of USTM, Madam Professor Dr. Pankaj Mittal, Honorable Vice Chancellor Professor Suranjan Das, Shri Atul Kothari, National Secretary, Shiksha Sanskriti Uttanyas, and Honorable Vice Chancellors, and other dignitaries, directors, and representatives from various parts of India. At the very outset, I would like to express my sincere gratitude and thanks to the organizers for having given me this opportunity to be part of this valedictory session of 97th Annual Meet and National Conference of Vice Chancellors 2023. Secondly, I would also like to, on behalf of Government of Assam, would like to express our gratitude and thanks to USTM team, particularly Dr. Mahbubul Haq Dangoria, for his unique leadership. Mahbubul Haq is a leader who began his career with 3 computers, if I remember correctly, way back in 2003. And today, the way he had established higher educational institutions and contributed to the society, we are deeply indebted to you, sir. Well, coming to the issue of
transformative higher education already, my honorable previous speaker has given some empirical evidences how the concept of Atmanirbhar Bharat has been implemented in various nook and corners of India. Well, when we talk about higher education and its transformative dimension, I sincerely believe whether we talk about transformative India or even general education, student remains the epicenter. It has to, the centrality of students cannot be brushed aside. So when we talk about students, we need to take a holistic picture for their overall holistic development. The fact is that we are talking about students must be in a position to know, to do, to be, and to live together. Mere conceptual understanding is not an end in itself. The ability to do something, as has been enunciated by the previous speaker, I think is the hallmark of this kind of transformative education. Along with that, we may not be, all the students may not be IS officers, IPS officers, or the leaders or vice chancellors, but all of us have the ability to do something. Amantaram aksharam nasti, nasti maulam aushadam, ayugga purusha nasti, yojakastuta dullabam. The concept of, all of our 5 fingers are not similar, but nevertheless, we have the ability to do something. What we need is amantaram aksharam nasti, A, B, C, D, O, A, Ka, Ha, all these syllables have their relevance. Amantaram aksharam nasti nasti molama aushadam. All trees have their medicinal values. Ayugga purusha nasti, no person is without having any capacity. What we need is yojakastruta dullabham. We need the yojak, the teacher who can take out the capacity of each student to excel. So this micro approach, the centrality of the students must not be brushed aside when we talk about general education or transformative education. I believe each student is a batabrikha, a tree by itself. When we solidify or strengthen their root, which is a connection to the root, our tradition, our heritage, Bharatiya civilization, a pan-Indian thought process, ability, the mental expansion, or the trunk is about cultivation. When the trunk is strong in terms of mind and body, then such student can contribute to the society. When the root is strong, when the trunk is strong in terms of mind and body, in terms of emotional quotient and social quotient, such students can contribute, the crown will contribute for the betterment of the society in terms of full path. The trees will contribute to the enrichment of the society. Parupakaraya phalantribrikshaha, parupakaraya brihanti najjat, parupakaraya duhanti gauha, parupakartha midang suriram. So therefore, I believe the centrality of students in terms of their holistic development, that in terms of IQ, UQ, SQ, is, I think, would be the most important aspect of such kind of transformative education. Secondly, I believe technology is the answer. I was just talking to the Honorable Vice Chancellor about the question of the centrality of technology. For example, in Assam today, we have both public and private, about 28 universities. We have 350 colleges. We have 46,000 schools. We have near about 3 lakh teachers. In a state where we have 3 crore 50 lakh population, I think this is a big number. Our student-teacher ratio is about 1:25 in these 50,000 odd schools of Assam. In these 350 colleges and all these 28 universities, public and private included, there is a shortage of resource persons, our faculty members. But I believe when we take the help of the SWAYAM platform or the MOOC courses, I think it will be a great answer to the human resource crunch and other
deficiencies that we confront on a day-to-day basis. It will also give us the opportunity. For example, a student of political science today are confronted only with certain theoretical, approaches. When they confront at the empirical level, they find a lot of dichotomy between the world of political science and the world that they confront in the real life. So if they can choose those subjects which they like it, I think technology can give us an excellent answer. In the report presented here, I believe we have not talked about certain issues. I don't know if those issues have been discussed here. But I think when we talk about transformative education, there are three issues. One is reaction to the present issues. Second is how we respond to the present crisis and issues of the society. And third is how we look to the future. Here lies the question of education, ESD, the concept of ESD, that is education for sustainable development. When we talk about Atmanirbhar Bharat, we cannot be bereft of the future. But the kind of existential crisis or the problems that we are confronting today, I think we need to give much focus on sustainable development and education. The Global Education Development Agenda reflected in Goal 4 of 2030 Agenda by Sustainable Development, adopted by India in 2015, seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. Climate change, livelihood, use of technology, environment are some of the issues that we can no longer neglect. West is not sharing their technology with us. In fact, rather in terms of consumption, West is at the top of everything, be it energy, be it food, or whatever you talk about. So no country is ready to reduce their consumption level. So we need to respond to these issues pedagogically, not just certain seminars, not just certain discussion, but at the epistemological and pedagogical level, we need to address this question, whether it is physical sciences, whether it is applied sciences or social sciences. We need to reframe our syllabi in such a manner that we can address our future crisis. With these words, once again, I congratulate the organization as well as the USTM team for having organized such an excellent program and congregation. Namaskar, Jai Hind, Jai Ahom. Thank you so much, sir. We would now like to invite Shri Rakam A. Sangma, Honorable Minister of Education, Government of Meghalaya, to kindly address the gathering. Sir. A very good afternoon to one and all. A chief guest of this beautiful function, Sir Gulab Chand Khattariji, the Honorable Governor of Assam, and Professor G.D. Sharma, Vice Chancellor, USTM, Meghalaya, Professor S. Das, President, AIU, and Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary, AIU, and Sri Atul Kottariji, National Secretary, Succession Sri Utanias, and Professor Nani Gopal Mahantaji, Education Advisor, the Government of Assam, and Dr. S. Ramadevi Panizi, Editor of University News, AIU, and not to be forgotten, Dr. Hope, and all my respected Vice Chancellor of different
central and private university across India, and my dear friends on the dais, and my dear students, before I begin my short speech, as I am the Education Minister of Meghalaya, would love to see that how many right now from my Meghalaya state here in the auditorium may would like to see. Can you please raise your hand? It's a huge number, right? Thank you so much. It is extremely glorious gathering and historic to me. In just 2 weeks old education minister of the state, I've been here in the midst of all the great people of the country. I'm extremely happy today to give my brief speech among the great of the greatest people across the nation here this afternoon. Friends, it is indeed a glorious investment on human development never ends, and we will never be lost. And I'm happy today and would like to thank on behalf of the government of Meghalaya to the USTM for having this glorious and the wonderful conference of 97th annual meet and national conference of Vice-Chancellor 2023. Governor of Assam and all the dignitaries across the country, on behalf of the government of Meghalaya, I would like to welcome each one of you to our beautiful state, Meghalaya, today. Friends, and my dear students, as India is one of the greatest democracy country in the world, I should say, not only on the democracy, I think India should be one of the global knowledge power in the world. When we all come together, when the great peoples together, when we contribute what we have today, it will live to the generation that is coming behind us. I believe, as many faculty members, many research scholars, many vice-chancellor here, and my brilliant students, let's leave our footprints for the generation coming behind us. Let's make our India a greater and greater in all respect. Friends, we always talk about competition and competitive world. We always compete with one another. We always compete with my friends. But today, as I also one of the physicists, because I did my postgraduate in physics from Northeastern Hill University, Shillong, as my vice chancellor is here with us, I would like to tell that today we have to compete with technology. Technology was the product of human minds. Yes, we have given all data for the easy access. But my friends would like to tell, but as human beings, as students of today, we should run ahead than the technology. Because
technology should not replace, should not substitute the human original mind. We should guide the technology, and we should not be guided by the technology. Therefore, but guiding the technology, taking control of technology, it's not going to be easy for all of us. Therefore, the brilliant minds of the global and the brilliant minds of Indians and the young people, as we have seen many great scientists across the globe that have come over. Because of their endeavor, we have the best technology today. We don't know what comes tomorrow. That will decide today. Therefore, when we investing our resources, when we investing our times, when we investing our precious, let's give our best to leave the footprint. I'm happy today for the USTM. I think you are doing what it needs for. As a northeastern state, as a tribal, as a son of the tribal people, would like to urge all my young friends, the northeastern state and across India, let's be the power and the pillar of our great nation, India. We don't know what comes next tomorrow. As the world going ahead looks at it globally, but India should not run behind. What comes tomorrow for our great nation, it will defend, it will decide by the great minds of today in the form of our Vice Chancellor, our scientists, our great people, our politicians, our businessmen. As the great minds living the values and beauty for us. Let's, young people, let's grasp this opportunity. Let's learn the best and sell delivered tomorrow. Therefore, would like to leave this word to all my dear students. You are getting this last opportunity. You're getting this best opportunity. As you invest your precious time in USTM, always remember, as this USTM planting humans, and this is a good soil for planting humans in the university. Prepared well to meet the challenges tomorrow. As an Indian, we are looking forward. As a government of Meghalaya, we are waiting for you to leave behind the governance, to leave behind this beautiful of all resources in your hands. Therefore, make our society, make everyone's confidence so that we can live everything's in your hands tomorrow. Therefore, once again, would like to thank the USTM family and all the Vice Chancellor of different universities across the globe. Your presence has inspired me. I believe not only me, your presence coming to this USTM and to Meghalaya has really inspired me. I've been told it's one of the largest attendance among the conference. And I've been told many of the Vice Chancellor
has brought their spouses, their wives, right? I've been told, we always tell that husband is the head of the family. What is decide? But wife is the leg of the family, which turn around the husband. I heard many of the family has went to visit the beautiful Cherrapunji, the glorious Meghalaya. Therefore, once again, on behalf of the government of Meghalaya, I would like to express my heartfelt gratitude from the bottom of my heart. We're looking forward of such beauty, values in the days to come. As a government, we will always be with you. We will always, whatever in what way we can support, we are always there beside you. Once again, thank you so much. God bless USTM. God bless Meghalaya. God bless each one of you. Thank you so much. Thank you so much, sir. We would like to take this opportunity to release a book titled Meghalaya Past, Present and Future, jointly authored by Professor G.D. Sharma and Professor P.R. Trivedi. We request our honorable guest, especially our chief guest, Sir, Honorable Governor of Assam, to kindly do the honors. Thank you. Ladies and gentlemen, now for the address by the chief guest, Shri Gulab Chand Kataria, sir, Honorable Governor of Assam. Sir. नमस्कार। भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कुलपति सम्मेलन के इस मंच पर उपस्थित मेघालय सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय संगमा जी, असम सरकार के शिक्षा सलाहकार श्री मणि गोपाल महंत जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अतुल कोठारी जी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सुरजान दास जी, महासचिव बहन पंकज मित्तल जी, और सबसे ज़्यादा जिनको मैं आज अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि वास्तव में इस विश्वविद्यालय के जो हक साहब यहाँ के चांसलर हैं, उनको मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय कुलपति शर्मा साहब, ये मेरा सौभाग्य है आज भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित आदरणीय कुलपतियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सब जो विद्वद्जन यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का भी मैं असम सरकार की ओर से भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आयोजकों ने भी मुझे ये अवसर दिया।
मुझे बताया गया कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के लगभग 934 विश्वविद्यालय संबंध हैं। इनमें से 15 विश्वविद्यालय अन्य देशों के भी हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में यह भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग, समन्वय और को सुगम करता है। विश्वविद्यालय और सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच संबंध का भी काम करता है। हमें आयोजन का दायित्व विज्ञान और तकनीक विश्वविद्यालय मेघालय दिया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जिसे नेक संस्था से भी ए ग्रेड मिला हुआ है। मुझे यह बताया गया कि इस विद्यालय में 6500 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें से 90% ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और 43% पर्वतीय क्षेत्र के बालक यहाँ पढ़ते हैं। इसमें लगभग 60% बालिकाएं इस विश्वविद्यालय में पढ़ती है। एक बार आप विश्वविद्यालय के सब ताली बजाएं। और इससे भी ज्यादा मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके विश्वविद्यालय में 20% गरीब छात्रों को भी आप उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। आपका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम। एक बार मैं फिर यहाँ के चांसलर हक साहब को हुई और उनकी टीम को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी इस सोच ने आपके इस विश्वविद्यालय को ऊंचाई पर लाया है। उसका कारण उन बच्चों का आशीर्वाद है जो आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, मुझे जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग यहाँ 400 से भी अधिक विद्वत जन भी पधारे हैं, जिनका अनुभव मेरे से बहुत अधिक है। आप शिक्षा क्षेत्र में एक लंबे समय से अपने इस कार्य को जो है वो कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आज हमारे पास नई शिक्षा नीति जो भारत के एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शन का काम कर रही है। यह भारत के वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी भारतीय विश्वविद्यालयों का निरंतर मार्गदर्शन कर रही है। मुझे जानकर भी खुशी हुई है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही रखा गया है। ट्रांसफॉर्मेटिव हायर एजुकेशन और आत्मनिर्भर भारत जो विषय का चयन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अगर सारे विश्वविद्यालय को और यहाँ पधारे हुए सारे विश्वजन को इस और अगर सोचने के लिए एक दिशा मिले तो निश्चित रूप से हम जो कल्पना कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु आने वाले कुछ समय बनेगा, वो आपके और हमारे सबके प्रयत्न से निश्चित रूप से उस पायदान पर हम जा पाएंगे। ऐसा मैं आप सब विद्वतजनों से उम्मीद करता हूँ। हमारे आज़ादी के इस अमृत काल में भारत में एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य रखा है। हमारा जितना भी बड़ा लक्ष्य है, उतना ही अधिक परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता है। केवल लक्ष्य तय करने से सफलता नहीं मिलती। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्कट इच्छा भी चाहिए, मन की तड़फन भी चाहिए और उसके अनुसार आचरण और व्यवहार भी चाहिए। तब जाकर के हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब इस पर ध्यान देंगे। भारत युवाओं का देश है। युवाओं को नैसर्गिक प्रतिभा का स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आधुनिक भारत के निर्माण में प्रक्रिया में और अधिक व्यापकता के साथ जोड़ने का आवश्यकता है। आज के हमारे इस समसामयिक परिदृश्य को देखें तो पाते हैं कि भारत का उच्च शिक्षा का तंत्र अमेरिका और जापान के बाद तीसरा सबसे बड़ा तंत्र भारत में उपलब्ध है। विगत 50 वर्षों में देश के विश्वविद्यालयों की संख्या 11.6% गुना, प्रतिशत नहीं 11.6 गुना इसमें विस्तार हुआ है। महाविद्यालयों की संख्या में भी 12.5 गुना वृद्धि हुई है और बालकों की संख्या की दृष्टि से भी लगभग 60 गुना इन 50 वर्षों में वृद्धि हुई है। लेकिन
आज भी हमारा सपना अधूरा है। आज हम सभी विद्वज्जनों ने सम्मेलन में दौरान उच्च शिक्षा के संदर्भ में गहराई से चिंतन मनन किया है। मेरे भी कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विश्वविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुसंधान परस्पर की गतिविधियां बढ़ाए ताकि विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनकर खड़े हों। अभी भी हमारे देश के विश्वविद्यालय दुनिया के विश्वविद्यालयों की 100 की संख्या में भी अपने आप को टच नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके और मेरे सबके लिए एक चुनौती का विषय है। हमारे वैज्ञानिक और विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान करने, उनके परिणामों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाएं और नई तकनीकी विकसित करते हुए उनका पेटेंट करवाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करें। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना हो, इस बारे में विशेष आग्रह है। हर 5 साल के बाद पाठ्यक्रम के बारे में हमें जरूर बैठ करके विचार करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार जब तक हम पाठ्यक्रम तैयार नहीं करेंगे तब तक जो बालक हमारे पास आ रहा है उसको हम उपयोगी बालक नहीं बना सकेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा करता है तो पाठ्यक्रम करता है। पाठ्यक्रम के कौशल शिक्षा और मूल्य शिक्षा का समावेश हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय बहुविषयक हों, इसमें कई विषय पढ़ाए जाए। बहुविषयक स्नातक शिक्षा को विश्वविद्यालय के अन्य विश्वविद्यालयों को स्थापित करने और सहयोग देने में सक्रिय हुआ एक दूसरा विश्वविद्यालय दूसरे को खड़ा होने में मदद करे, ताकि वो विश्वविद्यालय भी उसी प्रकार से सन 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके निकट एक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित करने की विश्वविद्यालय की अपनी भूमिका निभाएं। विश्वविद्यालय में प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व का काम कुलपति पर आसीन रहना चाहिए। इसका मतलब मेरा कहना है, जब तक आप इसमें स्वायत्ता नहीं देंगे उन्हें काम करने की, तब तक हम परिणाम लेने की जो सोच रहे हैं वो नहीं होगी। उतना उनको अधिकार और उनको सशक्त करें ताकि वो सही प्रकार से उस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा सके। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर वर्चुअल प्रयोगशाला और ऑनलाइन शिक्षण मंच और ऑनलाइन परीक्षाएं, आज परीक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। परीक्षा आज बालक के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। मैं सोचता हूं कि परीक्षा के इस पैटर्न को भी हम बैठ करके कोई ऐसा हल निकालें कि योग्य बच्चे को योग्य स्थान मिल सके और उसके मन में ये पीड़ा नहीं रहे कि मेरे पास कोई कमी थी इसलिए मैं इस योग्यता के पास नहीं जा पाता। इस पर विचार करिए। नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में भी रणनीति बनाकर विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ MOU करते हुए स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का अवसर मिले, ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत करके कुछ नई बातें सीख करके वो अपने यहाँ लागू करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की योजना प्रभावी और समयबद्ध ढंग से प्रारंभ करें। मैं सोचता हूँ कि अगर बालक को बनाना है तो उसके लिए यही मंदिर है। जब तक इस देश के शिक्षा के मंदिर को हम उस योग्य नहीं बनाएंगे जहाँ व्यक्ति तराशे जाते हैं, जहाँ मिट्टी की मूर्तियां नहीं बनती है, जहाँ पत्थर की मूर्तियां नहीं बनती है, जहाँ सजीव व्यक्ति की मूर्तियां बनती है, और सजीव मूर्तियों की जब तराशना पड़ता है तो उसके तराशने वाले कारीगर को भी उतना ही समर्पण से और उतना ही मनोभाव से अगर वो प्रयत्न करता है तो उसमें उस प्रकार के भाव पैदा कर सकते हैं। जो मैं और आप अनुभव करते हैं कि हम सब लोग इस ऊंचाई पर आ तो गए, पर हम उस समाज का ऋण भूल गए। जिस समाज ने आपको और मुझे इस कुर्सी पर लाकर बिठाया है, वो तो उन करोड़ों लोगों का योगदान है जिसके कारण से जिन महाविद्यालय में आप और मैं पढ़कर यहाँ आया हूँ, वो जनता ने हमको इस लायक बनाया है। जनता ने तो आपको सब कुछ दे दिया, पर अब आप भी तो कुछ जनता को दो ताकि उसके बच्चे भी आपके बराबर आ सके। तब हमें लगेगा कि हमने वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में, मैं सोचता हूँ शिक्षा से ज्यादा पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता, और शिक्षक से बड़ा सम्मान दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं होता है।
ये इतना बड़ा स्थान जो आपको और हमको मिला है, मैं सोचता हूँ सब गुरुजनों को मेरी विशेष प्रार्थना है, अगर देश बनाना है तो बालक बनाना पड़ेगा। कल का भविष्य क्या होगा ये आपके हाथों में है। आपके हाथों से ही कल का भारत गढ़ा जाएगा। उसको गढ़ने में लिए जिस तन्मयता का और जिस समर्पण का भाव चाहिए, बालक किताब से नहीं सीखता है, अपने गुरु के आचरण को देख करके सीखता है, अपने वातावरण को देख करके सीखता है। मैं सोचता हूँ कि मैं एक बार फिर आप सबके विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने दूर दराज के स्थान पर आप लोग यहाँ पधारे हो। आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी मेघालय के हमारे शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं आसाम की तरफ से कर रहा हूँ, और आसाम के पूर्वोत्तर के सारे सिस्टर स्टेट की तरफ से कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पधार कर इस शिक्षा के मंदिर को उठाने के लिए जो अपने मन के भावों को इकट्ठा करके जो रिपोर्ट आपने पढ़ी थी, मैं सोचता हूँ उसके अनुसार हम सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक बहुत ही पवित्र काम आपके हाथ में है। ईश्वर चाहता है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, सरकार या राज्य करने के लिए नहीं, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने चरित्र के आधार पर, अपने समर्पण के आधार पर, अपनी सेवा के आधार पर हम भारत को ऊंचाई दे सके। देने का जो वो केवल आपके ऊपर निर्भर करेगा। आने वाला भविष्य, आने वाला बालक आपकी इंतजार कर रहा है। देखिए आप और हम सब मिलकर के इसमें कहां तक सफल होते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया sir. Ladies and gentlemen, we are coming to the end of the whole program. We'd now like to invite Dr. Alok Mishra, Sir, Joint Secretary AIU, and he and his team has been regularly coordinating with the USTM team, making this event a success. We hope so. Yes. So before Alok Mishra gives the vote of thanks, formal vote of thanks, मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो एक ऐसी शख्सियत है जो खाने की जगह भी दिखते हैं कि आपने खाना खाया है कि नहीं, चाय की जगह भी दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं कि आपने मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पर जब स्टेज पे बैठने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं जाके। तो वो अभी भी छुपे हैं कहीं पे ग्रीन रूम में। तो मेरी रिक्वेस्ट है हक साहब से कि आप एक बारी यहाँ आए, and just to pay a gratitude to him, let us give him a standing ovation, the type of work he has been doing for all of us. Thank you very much. Haq Sahab, a standing ovation for you. Aye. सभी को नमस्कार। इस ऊर्जा से भरे हुए इस सभागार में यहाँ उपस्थित सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त माननीय कुलपति महोदय को, सभी वाइस चांसलर्स महोदय को जो है बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग इस समापन समारोह में पहुंचे हैं और इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गवर्नर आसाम सरकार श्री गुलाब चंद कटारिया सर, विशेष मुख्य अतिथि जो है मेघालय सरकार के शिक्षा मंत्री संगमा जी, और सम्मानीय अतिथि आसाम सरकार के विशेष सलाहकार मेहता जी, और दिल्ली से हमारे बीच पधारे राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के श्री अतुल कोठारी सर बहुत बहुत नमस्कार। सर ने बहुत ही एक दिशा भी दी है इस मंच पर आकर के जो है सर, हम सब उसका सम्मान करते हैं और आगे विश्वास करते हैं कि हम उसे कहीं दिल में सजो करके आगे उसे मूर्त रूप में लेकर के आएंगे। आज ये समापन समारोह, ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुंचा है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग, बहुत सारे लोगों ने दिन रात इसे मेहनत की है। सभी का नाम ले पाना, सभी को एक रूप में समा पाना, ये निश्चय ही संभव है। और मैं इस कार्यक्रम
कि जो हम कहें कि मूल रूप से जो आर्किटेक्ट करने वाली चीज है, हमारे भारतीय विद्यालय संघ की महासचिव मणि पंकज मित्तल मैडम, जो लगातार दिन रात इसकी मॉनिटरिंग और इसके हमेशा गाइडेंस में हमेशा उपस्थित रही। हम सब बहुत नगे से काम करते रहे। तो एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां। मैं कहूंगा कि एक जिस प्रकार मैडम ने ये कार्यक्रम, मैडम के कारण यहाँ संभव हो पाया है और नई ऊंचाइयों को ले रहा है, आप सब जिसको कहीं दृश्य रूप में देख पा रहे हैं। ये कार्यक्रम जो, क्योंकि एक टीम पूरी है और बहुत अच्छी टीम, जो हमारे इस समय जो हमारे अध्यक्ष AIU हैं प्रोफेसर रंजन दास सर, और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर GD शर्मा सर जो है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। लगातार जब भी दिल्ली की आवश्यकता पड़ती है सर वहां तुरंत पहुंचते हैं और हमेशा अपने सहयोग को जो है वहां प्रेषित करते हैं। ये हम इस विद्वत जो मंच आज यहाँ उपस्थित है उसे समापन नहीं बल्कि एक नए आरंभ का भी उद्घोष किया है। और ये जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री, मेघालय सरकार और माननीय गवर्नर साहब ने जो कुछ वक्तव्य दिए और इस मंच ने जो है यहाँ पर किस प्रकार से जो है वो एक अतुल कोठारी सर ने जो निर्देश दिए वो भी कितने हमारे लिए उपयोगी हैं। तो ये आज इस मंच ने भी, यहाँ समारोह ने उसे एक नई ऊंचाई प्रदान की है। हम इस वाइस चांसलर्स मीट में एक बड़ी संख्या में आज उपस्थित हुए हैं और ये सभी ने AIU के और USTM के आमंत्रण को स्वीकार करके आप सब यहाँ पधारे हैं, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार सभी माननीय कुलपतियों के लिए। और उन्होंने किस प्रकार से अपने व्यस्तम समय में इस मार्च के महीने में निकल के आना और एकत्रित होना, सर हम कृतज्ञ हैं आपसे, हम धन्य हुए हैं आपके आने से। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। आपका यह सहयोग आगे भी अपेक्षित है, ये शुरुआत है और ये विश्वास दिलाते हैं कि AIU उन तमाम सारी आपकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को कहीं मूर्त रूप देगा। और ये सहयोग मुझे लगता है देश में नए उद्घोष को भी कहीं पर पहुंचा रहा है। कल के ट्रिब्यून के पत्र को आपने देखा होगा, मुख्य समाचार पत्र पे किस प्रकार से उसे रखा गया है और वो एक किस प्रकार से सभी उपस्थिति को पूरे देश में अलग से पढ़ा जा रहा है। तो ये जो एक नई जागृति, इस पूरब के सूरज को सलाम, जिसने एक ऐसी मुकाम को दिया है। और यहाँ पर जिस प्रकार से हम सब इस नवरात्रि के मध्य में उपस्थित हुए हैं, उसमें माँ का भी एक बड़ा, जो हम सब एक आस्था और कहीं ये कहूँ कि वो आध्यात्मिकता का संगम भी हुआ है। तो यहाँ पर जिस देवी रूप में हम उपस्थित हुए हैं और युवा, उसको भी इस कार्यक्रम का आशीर्वाद मिला है। तो मैं यहाँ पर जो है माँ कामाख्या को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस यहाँ के मौसम सभी को सकुशल पहुंचाया है और सभी लोग स्वस्थ रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम को अटेंड किए हैं। तो इस रूप में ही ये सभी का सहयोग होता है। तो कुछ अज्ञात शक्तियां होती, वो भी हमारे सहयोग में कहीं उपस्थित रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है। ये जानना बहुत जरूरी है आप सबको कि किस प्रकार से ये चीज हमारे इस कार्यक्रम के रूप में आई है। मैडम ने इस कार्यक्रम के इसके धन्यवाद के प्रारंभ में ही हक साहब को बड़े हक से बुलाया। मैडम ने कहा कि आप पहले यहाँ पे आइए, फिर हम धन्यवाद करेंगे। तो मैं कहूंगा कि एक बार ऑलरेडी हम लोगों ने उनके धन्यवाद को, बट जिस शिद्दत के साथ में, जिस बुलंदी के साथ में, जिस जज्बे के साथ में उन्होंने तहे दिल से स्वागत किया है, उसके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मकबूल हक साहब के लिए और प्रोफेसर GD शर्मा जी के लिए, जिनका नेतृत्व, जिनका मार्गदर्शन लगातार दिन रात मिलता रहा है। और ये सब कुछ इस सभागार में आज दिख रहा है, दृश्यमान हो रहा है। और ये जो कुछ यहाँ, और इसकी एक लंबी फहरिस्त है, अगर मैं पढ़ूं तो शायद मुझे लगता है कि वो हम लोग शायद जो है किसी की फ्लाइट छूट सकती है, किसी के लिए मीटिंग छूट सकती है। तो मैं सारी समस्त टीम जो इसमें शामिल है, मैं एक साथ उस समस्त टीम को ये प्रिविलेज लेते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। चाहे वो ट्रांसपोर्ट टीम है, चाहे वो वेलकम टीम है, चाहे वो स्टेज की टीम है, बैकअप की टीम है, ऐसी 12 टीम्स जो लगातार 3 महीने से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे वॉलंटियर्स को बहुत धन्यवाद। सारे वॉलंटियर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। जो वॉलंटियर्स लगातार काम करते रहे, इनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कैसे इस मंच में, कैसे उस सांस्कृतिक संध्या को कैसे भूल सकते हैं।
जिस प्रकार हम होंगे कामयाब की उस धुन ने किस प्रकार से हमें गुन लिया, और उस सांस्कृतिक जो लोग शामिल रहे हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां सांस्कृतिक संध्या को, इस कार्यक्रम को दिया है। संपूर्ण ये जो सातों जो हमारी सिस्टर्स स्टेट है उनका जिस प्रकार प्रदर्शन रहा है अभिभूत करने वाला रहा है। ये हमारे लिए जो है एक बहुत ही सुखद क्षण है कि हम आज मतलब एक तरफ हम सब मिले हैं और हम यहाँ से फिर बिछड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक वो हम सब एक भावुकता भी कहीं महसूस है कि हम ये 3 दिन से लगातार यहाँ पर हैं, एक साथ मिले, तो मन को तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, तो हमारी AIU की टीम जो कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ बहुत से लोग पीछे काम कर रहे हैं, तो उनमें से विजेंद्र जी हमारे साथ चीजें हैं, और यहाँ पे सत्यपाल जी, मुझे लगता है यहाँ के बीच में मुझे लगेगा एक बार खड़े हो जाएं, सत्यपाल जी, रमा पानी मैडम जो है हमारे बीच जो है, आप सबने देखा होगा जो है, और इससे पीछे जो है हमारे जो IT टीम काम कर रही है, शिवम दीक्षित जी वहां पर हैं, डॉक्टर शेखो साहब वहां पर हैं, मैडम डॉक्टर पानी साहब है, और संपूर्ण AIU टीम इसको जो है वो देख रही है वहां से। तो हम एक बार उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो लगातार सहयोग कर रहे हैं पीछे से। और ये जो हम लोगों का आज कार्यक्रम है, ये अब एक समापन के उस दौर पर है, और हम सब जो यहाँ पर एकत्र हैं एक बार पुनः इस पूरब के सूरज को सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबके यहाँ आने का, और एक गर्मजोशी के साथ में सम्मिलित होने के लिए। हम ऐसी ही आशा करते हैं कि आने वाले कार्यक्रम में कि आपकी उपस्थिति और सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Request all to kindly stand for the national anthem. Jana Gana Mana Adinayaka Jaya Jan Singh Jaya शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे नारी तब जय गाथा जय गंगा जय We would request our honorable dignitaries to kindly remain in their place, our students also to please remain in the place, as our honored guests from the dignitary dais will be moving for the exit. I'm here. In the meantime, we would request our dignitaries and the students to please remain in their place. We would request our faculty members to kindly come up on the stage for the farewell song. Dear students, this is an opportunity to be of you all to be also part of such a historic moment.
Play, play.